So let's start with the endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज और ये जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड. Yes, their functioning is coordinated. So you are getting this. Endomembrane system के अंदर present है membranous cell organelles और ये जो membranous cell organelles है they are functionally coordinated. Yes, so they shows close association तो अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं. नाउ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इट इंक्लूड्स ER. So it's very well known to you that ER is endoplasmic reticulum. Then GBs, that is Golgi bodies. Lysosomes. Lysosomes, they are known as suicidal bags. They have digestive enzyme, hydrolytic enzymes, and the last component of the endomembrane system, that is vacuole. तो endomembrane system के अंदर present है 4 organelles: endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, and vacuole. So first of all, I will be starting with the endoplasmic reticulum. Now the endoplasmic reticulum term, it was given by the Potter. Term was given by the Potter. And the discovery of endoplasmic reticulum, it was done by the 2 scientists independently, that is Potter and Thomson. Now the endoplasmic reticulum, it consists of interconnecting membrane bound structures. Yes, so there is interconnection of membrane bound structure, and this membrane bound structure, it runs throughout the cytoplasm. It is present throughout the cytoplasm. So endoplasmic reticulum, it consists of interconnecting membrane bound structures. और ये जो membranous structure है, it runs throughout the cytoplasm. It extends from nucleus to the plasma membrane. Yes, so it extends from nucleus. For nucleus, I am writing in to the plasma membrane. For plasma membrane, I am writing PM. तो ये जो मेम्ब्रेन का नेटवर्क है ये सेल के अंदर प्रेजेंट है और इस मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है दैट इज सेवरल टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Yes, the surface area is several times more than the surface area of the plasma membrane. That's why we can say that this is one of the best site for the metabolic activities inside the cell. अब इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की वजह से जो सेल के अंदर स्पेस है दैट स्पेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 2 कंपार्टमेंट्स. सो दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैज डिवाइडेड द इंट्रासेलुलर स्पेस into the 2 compartments.
जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, दैट इज ल्यूमिनल स्पेस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है, दैट इज ल्यूमिनल स्पेस. And the space which is in the cytoplasm, rest of the cytoplasm, that is extraluminal space. So rest of cytoplasm, it represents extraluminal space. So now here I will be discussing the occurrence of the endoplasmic reticulum. So let's study the occurrence. Now this endoplasmic reticulum is well developed in the metabolically active cells. Well developed in the metabolically active cells like in the plasma cells, liver cells, pancreatic cells, interstitial cells. Interstitial cells, they are associated with testes. Now the endoplasmic reticulum is poorly developed in spermatocytes and the endoplasmic reticulum, it is absent. Yes, endoplasmic reticulum is absent in the resting cells. Resting cells पे absent है, as well as it is absent in the mature RBC. That is the red blood cells. Now after looking into the occurrence, let's see what are the different components which are associated with it. Now endoplasmic reticulum के अंदर 3 components present है. Yes, 3 components they are present. Now first component, जो first component यहाँ पर हम discuss करेंगे, that is cisternae. Now this cisternae, it consists of flat, sac-like, parallelly arranged interconnected structures like this. तो देख रहे हैं आप कि ये जो cisternae है, इसके अंदर प्रेजेंट है फ्लैट, parallelly arranged interconnected structures. Yes, so they are going to represent the cisternae. Now the second component associated with the endoplasmic reticulum, that is tubules. So these are tube-like extensions. Tube-like extensions है, they can be unbranched or they can be branched, and they can show the connection. They may be connected with the cisternae. The third component, it represents vesicles. Vesicles, they are sac-like structure which can be oval or can be rounded. तो 3 कंपोनेंट समझ आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. cisternae, they are sac-like flattened structure which are present, which are arranged parallelly. Tubules, tube-like extensions, can be branched or unbranched. Vesicles, they are the sac which can be rounded or ovoid in shape. So now here I will be discussing types of endoplasmic reticulum. Now the endoplasmic reticulum, it is mainly divided into the 2 categories, 2 types, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. तो 2 तरह का endoplasmic reticulum यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. RER, that is
rough endoplasmic reticulum, SCR, that is smooth endoplasmic reticulum. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये रफ अपीयरेंस दे रही है. Why the rough appearance is there? Because the membrane is associated with the protein factories, that is ribosomes. So rough appearance is due to the association of the membrane with the ribosomes, and in the case of the smooth endoplasmic reticulum, this association is absent, right? अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is also known as granular type, and this is a granular type of endoplasmic reticulum. अब देखेंगे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर राइबोसोम का एसोसिएशन कैसे हो रहा है. ये यहां पर मैं बना रही हूं सिस्टर्ने, जैसे ये मैंने फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, राइट. और इस सिस्टर्ने के ऊपर मैं दिखा रही हूं अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम. हियर आई एम शोइंग द अटैचमेंट of one ribosome, right? This is one ribosome, and ribosome की जो category, the type of the ribosomes which are associated with the endoplasmic reticulum, that is ATS. तो मैंने आपको बताया ही है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दे आर ATS राइबोसोम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच्ड है, दे आर ATS राइबोसोम. अब इस राइबोसोम के अंदर आप दो सब यूनिट्स देख रहे हैं. ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, दैट इज 40S, द लार्जर सब यूनिट इज 60S, एंड द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम टू द सिस्टर्ने, इट इज विद द हेल्प ऑफ द लार्जर सब यूनिट, दैट इज 60S. और इस अटैचमेंट के अंदर, राइबोसोम की अटैचमेंट के अंदर, यहां पर जो प्रोटीन हेल्प करेंगे, दीज प्रोटीन्स दे आर नोन एज riboforins. The proteins which helps in the attachment of the ribosome to the cisternae, they are riboforins. Now, in the case of the SCR, the riboforins, they are absent. That's why the attachment of the ribosome over the endoplasmic reticulum, it is not possible. So here, riboforins, they are absent. अब जहां पर राइबोसोम अटैच्ड है, वहां पर इस मेम्ब्रेन के अंदर, सिस्टर्ने की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे पोर्स. So you please keep this in mind that the membrane is going to possess the pores, and where the pores will be present, where there is attachment of the ribosome. तो यहां पर membrane में pore present है, and here the pores, they are absent. Got this? So it's very well known to you that the function of the ribosome is that it is involved in the synthesis of the proteins. तो ये राइबोसोम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. लेट्स से दिस इज द प्रोटीन जो राइबोसोम फॉर्म कर रहा है, बट यू प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जैसे जैसे ये प्रोटीन बनता जाएगा, दिस प्रोटीन थ्रू द पोर इट इज ट्रांसफर्ड टू द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो प्रोटीन बनेगा through the pore, this protein, it is transferred to the lumen of endoplasmic reticulum. So this one is clear. अब ये जो RER है, mainly RER के अंदर जो component present है, that is cisternae. This is main component, and the tubules, they can be present, but the number is less.
And in the case of the SCR, mainly they are formed of tubules and vesicles. Now after this, let's see ये जो RER है और SCR है, इनका origin कैसे होगा, development कैसे होगी. Now let's see more differences between RER and SCR. Now the RER, it may develop from nuclear membrane. And SCR, it may develop from RER. तो देखिए यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैं ये बना रही हूं इनर मेम्ब्रेन. यस, सो आई एम ओनली शोइंग सम पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. ये मैंने बनाई इनर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर अब ये मैं बना रही हूं आउटर मेम्ब्रेन. सो यू गेटिंग दिस इज inner and this is outer membrane. तो ये जो outer membrane है, this results in the formation of the RER. So you can see here this outer membrane, it is forming the RER. और इस RER के ऊपर ये जो मैं स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूं, गिविंग द ग्रैनुलर अपीयरेंस टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज राइबोसोम्स. गॉट दिस? अब ये जो RER है, इसकी जो पोजीशन है वो इंटरनल है. यस, द पोजीशन इज इंटरनल, दैट इज इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है. बट जो SCR है, जनरली इसकी जो पोजीशन है वो पेरिफेरल है. द पोजीशन इज पेरिफेरल, इट इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ RER is very much common. Yes, it is well developed in the cells which are involved in the protein synthesis. RER is well developed in the cells which are involved in the protein synthesis, like pancreatic cells, liver cells. और जो SCR है, it is common, it is active in the cells which are involved in fat synthesis, glycogen synthesis, metabolism, and steroidal synthesis. तो देखते हैं अब कौन से सेल्स के अंदर SCR वेल डेवलप्ड है. दे आर वेल डेवलप्ड इन adipose cells. They are involved in the storage of the fats. Then interstitial cells. Interstitial cells, they are the part of the testes. Liver cells. So liver cells, they are both involved in the protein as well as they are involved in the metabolism of the fats. Adrenal cortex. Adrenal cortex के जो cells हैं, they will form steroidal hormone. Then leukocytes. You know the leukocytes, they are the type of the WBC, that is white blood cells, muscle cells, and retinal cells present in the eyes, right? तो यहां पर अब हमने लिखे हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द RER एंड SCR. सो नाउ हियर आई विल बी डिस्कसिंग फंक्शंस एसोसिएटेड विद दीज टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
So let's first start with the functions of the RER. RER के साथ राइबोसोम की अटैचमेंट है. So one function of the RER that it is involved in the protein synthesis. तो अब RER है, ये कौन कौन से प्रोटीन फॉर्म करेगा? RER results in the formation of the lysosomal protein, the protein which will become the part of the lysosomes. You know the lysosomes, they are suicidal bags which contain digestive enzymes. Result in the formation of plasma membrane protein and secretory protein. Secretory proteins, they are the proteins which are formed inside the cell, but now these proteins, they will pass out through a process that is known as exocytosis. I will be dealing the detail of this process in the lysosomes. अब कौन से प्रोटीन है जो RER नहीं बनाएगा? It will not form the cytoplasmic proteins. तो ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है, they are not formed by the bound ribosomes. Yes, they are not formed by the bound ribosome, bounded with endoplasmic reticulum. Instead, they will be formed by the free ribosomes in the cytoplasm. और फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, they are again ATS type. So you got this? तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रोटीन्स का नाम लिखा है, these proteins they are formed by the bound ribosome, bounded with the endoplasmic reticulum, but these proteins they will be formed by the free ribosome. अब ये जो प्रोटीन बन रहा है by the endoplasmic reticulum, the ribosome associated with it, इस प्रोटीन की प्रोसेसिंग भी होगी. Yes? The modification of the protein will also occur. तो ये मैंने बनाया सिस्टर्ने, right? और इस सिस्टर्ने के ऊपर there is attachment of the ribosome. जिस प्रोटीन की हेल्प से अटैचमेंट हो रही है, that is riboforin. So ये जो राइबोसोम्स हैं, they are forming the proteins. अब जैसे जैसे ये प्रोटीन बनता जाएगा, ये जो प्रोटीन है स्पेस के अंदर ट्रांसफर होगा, ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर होगा, एंड इन द ल्यूमन दिस प्रोटीन इट विल अंडरगो मॉडिफिकेशन. Yes, this protein it will undergo processing, modification. तो एक जो प्रोसेसिंग इस प्रोटीन की हो सकती है, वो यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं. प्रोटीन के साथ साथ there is attachment of the oligosaccharides, that is sugar chain. तो जब प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड की अटैचमेंट होती है, so it results in the formation of glycoprotein, and the formation of the glycoprotein, this process, it is known as glycosylation. Are you getting this? Addition of the carbohydrate to the protein, it occurs through a process that is known as glycosylation. तो यहां पर अपने बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. But the completion of the glycosylation, the terminal part of the glycosylation, it will occur in Golgi bodies. So you got this? Starting कहां पर होगी? ER के अंदर, और terminal part कहां पर होगा? Golgi bodies के अंदर. So after looking into the functions of the RER, now I will be starting with the functions of SCR here. Let's see the functions of SCR. Smooth endoplasmic reticulum.
Now the smooth endoplasmic reticulum, it is involved in the synthesis of fats and steroids. Along with that, it is also involved in the metabolism of glycogen. Now the smooth endoplasmic reticulum, it is involved both in the formation as well as breakdown of glycogen. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम्स बोथ फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज ब्रेकडाउन. सो फॉर्मेशन विल अकर फ्रॉम द ग्लूकोज. तो जो ग्लूकोज है इसकी पॉलीमराइजेशन होगी और पॉलीमराइजेशन के बाद बनेगा ग्लाइकोजन. द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. राइट. अब इसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा एंड नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. So breakdown of the glycogen to the glucose, it is performed in the endoplasmic reticulum and this process is known as glycogenolysis. Glycogenolysis. So this is fine. Another one, the endoplasmic reticulum, it results in the formation of microbodies, that is spherosomes and glyoxysomes. So what are these microbodies? I will be discussing this in the forthcoming part of the lecture. Next, ये जो smooth endoplasmic reticulum है, it is involved in the breakdown of foreign compounds. Breakdown of the foreign compounds like alcohol, drugs, pollutants, carcinogens. तो इन सब का जो ब्रेकडाउन है, फॉरेन कंपाउंड्स का जो ब्रेकडाउन है, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द एससीआर. द ब्रेकडाउन ऑफ द फॉरेन कंपाउंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फॉरेन कंपाउंड, दिस इज ज़ीनोबायोटिक्स. इस ब्रेकडाउन को परफॉर्म करने के लिए इट यूटिलाइजेस साइटोक्रोम P450. यस, तो ब्रेकडाउन को परफॉर्म करने के लिए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट यूटिलाइजेस अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज साइटोक्रोम P450. Now cytochrome P450 can perform several reactions and one reaction which can be performed by it, that is hydroxylation. So what it will do, it will convert the lipid soluble compounds through the hydroxylation into water soluble compounds. तो हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स को कन्वर्ट करेगा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स के अंदर एंड दीज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स दे कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Now, along with this, the smooth endoplasmic reticulum, it is involved in the uptake and release of calcium. Yes. So, the next function, uptake of calcium ions. This is during muscle relaxation and release of calcium ions. This is during the muscle contraction. तो मसल रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प करेगा बाय इन्वॉल्विंग इन द अपटेक एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now in the retinal cells, endoplasmic reticulum,
It is represented by the myeloid bodies. And these myeloid bodies, they represent SCR, that is smooth endoplasmic reticulum. Similarly, in the nerve cells, endoplasmic reticulum, it is represented by Nissls granules. And these Nissls granules, it represents RER. Then in the muscles, the endoplasmic reticulum which is present, that is sarcoplasmic reticulum. तो मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And this sarcoplasmic reticulum, it represents SCR. And while discussing the cell wall, I had discussed plasmodesmata with you. In the plasmodesmata, I had discussed कि जो पोर है इसके बीच में present है tubular structure, and that tubular structure is extension of the endoplasmic reticulum. The name of the tubular structure is desmotubule, and desmotubule can be formed both by the SCR as well as RER. So this was all about the endoplasmic reticulum. Now I will be starting with the second component of the endomembrane system, that is Golgi bodies.